आज ही जब वो राजभवन गई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, छेड़छाड़ किया, उनको सेक्सुअली हरास किया और मोलेस्ट किया और गलत व्यवहार किया। Those who engineer these filthy narratives are totally moribund character. That a more sinister plot has been hatched in the Raj Bhavan. शुरू का दिन था जब गवर्नर साहब उनका जो दुर्नीति, उनका जो अन्याय, उसके अगेंस्ट में बात करना लगा, तो अभी गवर्नर का अगेंस्ट में मोलेस्टेशन केस। और ये सिर्फ गवर्नर नहीं, किसी का भी, कोई भी नागरिक पश्चिम बंगाल का जो ममता बनर्जी का सरकार का विरोध में बात करेगा, उनका सरकार का अन्याय का हाथ उठाएगा, तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन को काम पे लगा के आर्म्स केस, मोलेस्टेशन केस, gang rape case, ganja case, ये दे देगा। Now viewers, there's a showdown going on between the Trinamool Congress and West Bengal Governor CV Anand Bose, and this has taken an ugly turn after the Trinamool Congress cited a molestation charge against the governor filed by a contractual staffer. We're getting you details of the case. There's a complainant, and in her complaint she wrote to the police alleging that she was molested on 2 occasions by Governor CV Anand Bose. मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? I welcome all the generous allegations and the frequent innuendos passed on me by some political forces. I understand, my friends, there is more in the offing. But one thing is clear. None of the absurd dramas is going to deter me from my determined efforts to expose corruption and curb violence. Those who engineer these filthy narratives are totally moribund character. That a more sinister plot has been hatched in the Raj Bhavan. We know the characters chosen for this. Beware. I tell the political party that is plotting against me, this is no storm. This is only storm in a teacup. Do not be surprised if you realize I am the storm. Bring out all the weapons from your armory. Use it against me. I'm willing. I'm prepared. Sorry, my detractors. I have learned the lessons to fight, not flight. Waiting for the next grenade and your hidden bullets. Yes, with great expectations. Please fire.